Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to the eyewitness accounts, elephant elephant screamed and ran for higher ground. Dog refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding area, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. Basically, what happened when tsunami about to come in India and Sri Lanka? Animals knew that something is going to happen bad. So the elephant screamed and ran for higher grounds कि भाई कोई ऊंची जगहों पे चले जाएं. दूसरे dogs refused to go outside. uh, Zoo animals didn't go outside. They rushed to their shelters and they refused to go uh, refused to come outside. Okay, तो basically क्या था कि if something if some natural things natural disasters is going to happen, animals knew before humans that something is going to happen bad, so they ran away. When tsunami was going to happen in India and Sri Lanka, elephant ran away, dogs remain inside, zoo animals remain inside, flamingo abandoned their breeding areas and went somewhere else. Okay, many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. We cannot be sure whether animals have sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian coast killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. Basically, same I was telling you that if natural disaster is going to happen, if anything is going to happen with earth, animals know before humans. Ab few experts says maybe this is their sixth sense, or maybe their this is because of their hearing capacity. They can hear acute voices, uh, unlike humans, कि वो जो उनके सुनने की शक्ति होती है ना, वो बहुत तेज होती है. ह्यूमंस की जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत कम होती है, और जो एनिमल्स की होती है वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत एक्यूट वॉइसेस जो होती है वो भी वो सुन लेते हैं. इसकी वजह से ही उनको पहले ही पता चल जाता है कि अगर अर्थक्वेक आने वाला है या वेव्स आने वाली हैं कुछ भी, तो उनको पहले पता चल जाता है और वो उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं. तो वही बोल रहे हैं कि जब ये वेव आई थी तो 1,50,000 people were dead in many countries, but less number of animals were dead because of their hearing capability और their sixth sense, जो भी आप बोलना चाहें. ठीक है. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephant, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the
Patangala beach inside the park, but no animal carcasses were found except for two water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed three elephants running away from the Patanangala beach. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gala said his two dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि ना, ये अब बता रहे हैं कि नेशनल पार्क में इतने और ये आपके कडलडोर कोस्ट था, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल जो थे उनकी डेथ नहीं हुई थी, लेकिन जो ह्यूमंस थे, जैसे नेशनल पार्क था, वहां पे एलिफेंट, लैपर्ड्स, बर्ड्स और बहुत सारे वाटर बेफेलो, ये सारे थे, लेकिन उनमें से डेथ बहुत कम की हुई, मतलब सिर्फ टू वाटर बेफेलो जो थे उनके ही मतलब कार्केसेस, मतलब शव, ठीक है ना, तो वो ही मरे हुए मिले थे, बाकी सब लोग बच गए थे क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया था कि कुछ होने वाला है और वो वहां से छोड़ के चले गए थे, ठीक है ना। और नहीं तो जो बचे थे वो अपने शेल्टर्स में चले गए थे कि भाई अंदर चले गए ताकि पानी में बहे नहीं। लेकिन ह्यूमंस जो थे, वो बहुत सारे ह्यूमंस जो थे, मतलब नेशनल पार्क में तो 60 ह्यूमंस पानी के साथ बह गए थे। तो एक श्रीलंका में एक जेंटलमैन है, वो बता रहे हैं कि यूजुअली हिज डॉग्स loves to roam on the beach, but when the tsunami was approaching they refused to go out, and because of their refusal the life of that gentleman was saved, क्योंकि अगर वो चला जाता बीच में तो वो बह जाता, लेकिन अब वो उसके डॉग्स गए नहीं, मना कर दिया डॉग्स ने, इसलिए वो गया नहीं और उसकी लाइफ बच गई। अच्छा, समझ में आया ये चैप्टर? यस सर। है ना? यस सर। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं इसमें, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप कर लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आप या तो लिख लो या फिर मार्क कर लो, जैसा करना है वो कर लो, पर मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, मुझे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है सर टेक्सचुअल क्वेश्चन की ना? हाँ Yes, वही sir. एक्चुअल।